So, Jai Bharat to all of you. And today, this is the second series of interview discussions with you. तो कल जो मैंने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन. तो जस्ट इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, सो आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दैट particular conversation and video on introduction. I have discussed 10 questions. So today also I'm going to discuss 10 questions, but this time my focus is on academic and career goals. लेकिन उसके पहले थोड़ा आपको इंटरव्यू के बारे में फिर से बता दें, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप रीइटरेटिंग विथ यू व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू. तो आप सबसे पहले ऐसे सोचिए ना कि व्हाई डू दे टेक इंटरव्यूज, इजंट इट, व्हाट फॉर. उनको पता है यू आर गुड विथ इंग्लिश, उनको पता है यू आर गुड विथ मैथ्स, राइट, रीजनिंग एंड स्टफ लाइक दैट. They have looked at your CGPA also, so they know what kind of a student you are. They've looked at your resume. So why would somebody like to interview at all? And what do they check in such a short period of time? It is very crucial for us to understand. So you take interview as a barometer of competitiveness. पहली चीज ये है ना, दैट आप अपने आप को प्रोडक्ट के रूप में सोचिए, दैट देर आर 100 प्रोडक्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ जज, राइट. जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा ना, उसी को वो लोग पकड़ेंगे. वाई? बिकॉज आपको भी यही करना है. Later on, you have to show your leadership skills in such a manner that you are able to differentiate your product and service in the market. तो अगर अपने आप को अगर बेचना नहीं आता है ना, तो दैट कैन नॉट बी लीडरशिप. तो कई लोग सोचते हैं कि ओके, हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो इट इज माय नेचुरल राइट टू गेट इन अ बिजनेस स्कूल. बट इट इज नॉट लाइक दैट. पढ़ाई तो है ही, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट. But it is also very important that you show competitiveness, you show that desire to succeed, you show that determination to succeed, and you fight it out. And you show your capability to differentiate, to be different from others, right? That aggression. Aggression का मतलब ये नहीं है कि आप चेहरा वेरा बना लिए and you become very angry and all that. Aggression is through intent of knowledge, of knowing things very deeply about issues. Aggression is also about a lot of thought that should go into your answers, right? And a lot of practice and covering all the bases, right? From GK to your subjects, to your work experience, to your internships, to your summer training, to your economics. So everything is covered. Then I would say that you are the right person for interview. I'm doing a lot of research. Research word I'm using a lot because I think that is going to be very, very crucial, right? सो हर इंटरव्यू वाले मेरे सेक्शन में शुरू के 4-5 मिनट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू दैट इंटरव्यूज में अच्छा करने का मतलब है यू इंगेज देम. अगर इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन, यू आर विनिंग द गेम. बट अगर 20-21 साल के जैसे लोगों के साथ में अगर इंटरव्यू बिकम्स जस्ट मोनोलॉग, कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप आंसर दे रहे हैं, देन दैट्स नॉट द वे इंटरव्यू शुड हैज टू गो. सो द ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू. आपकी ड्यूटी है टू इंश्योर दैट यू स्पीक लाइक एन एडल्ट टू देम. आपका 20-21-22 साल, कुछ लोगों का 24-25 साल हो गया. आप वहां जाकर के ऐसे ही मतलब you can't behave like a 15-year-old boy and girl, isn't it? So you need to be a man, you need to be a lady out there, right? You who's confident. They want to see that यही स्टूडेंट जो है बाद में जाकर मेरे thousands of crore संभालेंगे. तो मेच्योरिटी भी होनी चाहिए, राइट? यू कांट एक्ट लाइक कॉय शाई. और आप हैं नहीं वैसे. 21 साल में सब लोगों को सब कुछ समझ में आता है. सो यू कैन नॉट एक्ट लाइक अ इनोसेंट kind of a person who doesn't know anything, who doesn't like politics, who doesn't understand politics. ऐसा नहीं होता है, right? If you cannot engage with society, if you don't know politics, if you don't understand technology, if you don't understand legality, in what kind of environment we are actually, working, then it's very difficult, right? You have to manage businesses, and businesses are very, very challenging. So it is said that we stay in a VUCA world, right? Volatile and then very uncertain, complex. That kind of a world we are staying. So in this VUCA world,
How do you manage businesses where things are changing, technology is really changing? So it's important for you to really understand. In fact, in my next video, I'm going to talk about future of business, right? And I will take up some more kind of questions. But let me share today my agenda so that we can just discuss those questions. So here are the questions on your screen now. Okay, I hope it is visible to all of you. Right. So these are the 10 questions in this session I'm going to discuss. Why do you want to pursue an MBA or this particular degree? Very, very important question, needless to say, isn't it? So I will keep flip-flopping between sharing and so we'll take up two questions at a time. So why do you want to join our business school? And why do you want to pursue an MBA itself? And very, very important question. So let's uh, you know stop the share now. So the question is why MBA and why do you want to join this particular business school, right? So why MBA? ऐसा sound करता है कि it's a very easy question, but not so easy question, right? There are layers after layers which you can talk in terms of why an MBA. Now, अगर आप ऐसे देखें ऊपर ऊपर तो why MBA is very sure. Who would not say अच्छा MBA because I want to get a very good salary, isn't it? I want career. Largely यही रहता है. You want a very good job and you are young, you are in final year and you want your first job. So that's why an MBA. And a lot of times you are working for 3, 4 years in a software company or company, growth नहीं मिल रहा, पैसे ज़्यादा नहीं मिलते. And then you see in business schools कह रहे 2 साल में business school में गए and then the salaries doubles, tripled. So yes, that's the reason why one would like to go for an MBA program. So, in a superficial manner, these two are the reasons why somebody would like to go for an MBA. But I think a couple of things your board and your interview board would like to know from you. One, आपने कितना सोचा है? How deeply you have thought? ये तो बहुत superficial है कि ठीक है पैसे मिलेंगे, ठीक है करियर करियर चेंज हो जाएगा, करियर ग्रोथ हो जाएगा. But the question comes up, what does an MBA has to offer, isn't it? Or कई बार a lot of people don't know at all because they are so engrossed in their CAT preparation or ZAT preparation or their, you know, अभी भी मेरे पास स्टूडेंट आते सर after ZAT I will prepare. But मेरे पास so many students are there who are already preparing for interviews for last 6 months because I've been telling them prepare early. Or just after CAT, they have been like doing a class of 2.5, 3 hours every day with me. I'm not saying you are not going to win, but please start early. राइट ये जैट का नहीं चलेगा कि जैट ठीक है इफ यू नॉट डन वेल इन कैट देन यू हैव एवरी रीजन टू go for that but I would still say that you can invest some amount of time in your interview preparation. But anyway, let's come to this question, why an MBA? I would have really loved your answers, had I been live. But I think there are 16 or 17 more subscribers that are required for me. So after that, I can get live and can I get your, your inputs and your comments and all that. But till that time, I think this is the way. I have never really, taught like this. For me, it's very difficult. When I do get your response, I'm more than happy. But anyway, so virtual you, I'm going to get answers. So why an MBA? So okay, let's go to next part of why an MBA. One would be career growth and progression. That's something which is very, very critical and important because 2 years of an MBA in a business school, which is very rigorous, which works on various aspects, right? It works on your personal aspects, it works on your professional aspects. So you come out as someone who's quite mature, lot of knowledge on various fields, and therefore an MBA automatically becomes a very attractive individual to corporates because you are ready to join corporate world and you are actually a ready-made material for them to put you in important assignments and positions. So that's why one would like to
go for an MBA. So I would say career growth and progression is something which is very crucial. What else? Uh, so why an MBA? Because the world is about networking, right? So the network which you get is what you become in future. So आपको पता ही होगा, जिसका भी strong network है, आप देखिए LinkedIn कैसे it has become the number one site for any professional person. Reason, networking is strength. And therefore, you can buy the network of a business school. You pay 15 lakhs, 20 lakhs, and all your seniors are CEOs, vice presidents, and you can connect with them because they are your alma mater. जैसे स्कूल से बहुत कनेक्शन हो जाता है, आपके सेम स्कूल के सीनियर्स होते हैं, दे गिव यू रिस्पेक्ट एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज ब्रोकन. उसी तरह से बिजनेस स्कूल में भी ऐसा ही होता है. सो द हायर, और जितने अच्छे बिजनेस स्कूल में जाएंगे उनके एलुमनस जो है उतने अच्छे पोजीशंस पर होंगे. एंड दैट्स हाउ यू आर एबल टू लीवरेज दिस network to your advantage. So if you are going to say that yes, networking is something which for which I would like to come here, I think you are well within your rights. और क्या, इट्स एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. आप अगर देखेंगे ना, ग्रेजुएशन तक बहुत कम लोग थॉट देते हैं पढ़ाई पर. हम लोग काफी इमेच्योर भी होते हैं, 18 19 20. सो देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू डू इन कॉलेज, राइट? पार्टी, मेक फ्रेंड्स, play also. I used to play a lot, right? So when you are that young, basically you are concerned, except if you are very studious type, largely 90% of them are more concerned about learning as well as exploring other aspects of life. That's what a college does. But by the time you reach 22, 23, 24, I think your focus shifts from uh, only, on issues which are frivolous to issues which are deep and more meaningful. And I must tell you, जितना मैंने सोचा होगा, thinking किया होगा business school days में, I did not think before that. I studied mathematics and still I did not think. So business school is a place of reflection, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिंतन और मनन, if your Hindi is of that level. So you reflect a lot, you think a lot, you meditate a lot, right? You think on issues, you make strategies, and there is a lot more teamwork in a business school. ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा ग्रुप स्टडी ठीक है, थोड़ा होता है ग्रुप स्टडी, बट यहाँ पर लॉट ऑफ थिंकिंग गोes. You can say innovation comes in, cross cultural understanding happens. Right. So I had a batchmate who was from Chennai. I never stayed with any Chennai guy. There's another guy from Punjab. So there's so much of learning outside the class, outside the business school, and also there's a learning. So somebody is an engineer. There was a doctor in my batch, economist, commerce, obviously, a lot of commerce people, BBA people. Right. So there is so much of learning out there, and people bring in perspective. Business school is a fantastic, fantastic place. I always say that business school is a very nice khichdi where you bring in all the good things together and it really, really improves your health. So you learn about psychology, you learn mathematics, you learn computer science, right? You learn AI, you learn machine learning, you also learn finance, so accounts, economics, dramatics, right? Psychology, I've already told. So there is so much contribution of all the subjects which you can say in a business school is something which is fantastic. And that's why and everywhere you have to think very deeply. So what I would suggest, and जो अगला answer है ना, why this business school is connected, is you look at any business school's course structure, their prospectus, website, go through the entire course structure. याद कर लीजिए. And then you will get so much of insight about why management. जब आप देखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जब आप देखेंगे we in finance, you learn about financial management. When you will see accounting, right? When you will see Philip Kotler being taught on marketing and 4 Ps of marketing and STP. When you will learn about Michael Porter, right? Five forces, 4 forces, different strategies. When you will learn Pestel, a lot of you know SWOT analysis. When you will learn value chain analysis, when you will read so many books,
fantastic HBR, Harvard Business Review case studies. Amazing world you get into. So I'm a pretty average. You can say I was an average student, but it turned me from an average student to, you can say, a thinker, right? A reflector, a meditator, someone who who gets the ability to get deep dive into something. So I really endorse a business school because you change as a person, right? Communication skill goes without saying. You do presentations. रात के 2 बजे भी उठ करके आपको अगर कोई बोले कि presentation कर दो, तो you can do that presentation, isn't it? So therefore, if you can transfer this passion, और वो passion आएगा कैसे? Fake passion नहीं आ सकता है. Passion आएगा when you start reading a lot about business schools, what it has to offer. Not the tidbits, not the stories. Academically, how it changes you. See, कई लोग भूल जाते हैं ना कि business school is an academic institution. बाकी सारी चीजें co-curricular, leadership, dash, 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 it is all there. But finally, it is about someone who can make strategies in future. Someone who can think new, isn't it? Someone who can connect the dots. This is what a leader is. Leader is not about just speaking and having a great communication skill. No, not anymore. पहले चल जाता था, ठीक है, बहुत अच्छा स्पीच दे दिया आपने तो यू आर अ मैनेजर और लीडर. बट ऐसा नहीं है अब. You can be sitting at your home and you can manage so many things. So someone who can harness the resources, leverage technology, take decisions, right? Informed decisions, has a lot of knowledge on various issues, has wisdom. That's what business school is all about. Therefore, I think it is very crucial for you to understand this. And can you, I was talking about transfer this passion to the board, to the interview board. If you're able to do that, I think you've passed the interview. You will get 10 out of 10. And that's what I will always say. So therefore, when it comes to this question, why management? I think somehow you need to transfer that vision that I'm here to really transform myself. It's a transformational experience, right? That's what I'm seeking. That's why your business school. Money is a byproduct. It's a good thing. Obviously, we all need money, isn't it? It's just a byproduct, right? Becoming a CEO is a byproduct, but doing good work, I am looking for some really challenging work. I'm young, right? I'm dying to get good work. Give me that. That's why a business school. Because here the companies are actually looking for talents who can take challenging positions, right? That's why a business school. Therefore, आपका सबका अलग अलग अपना आंसर हो सकता है, रीजन. और वो बाकी जो करियर ग्रोथ, प्रोग्रेशन, डैश डैश डैश, एलुमनस, नेटवर्किंग एंड ऑल दैट, वो भी बोल दीजिए, बट वो लास्ट में होना चाहिए. पहले क्या होना चाहिए? You should be able to really make them understand why you are, what kind of experience you are looking for. That's why 1.5 2 साल अपना क्यों बिताएंगे. तो आप बोल सकते हैं that I am here to become a monk who will get Ferrari one day. बट वो बात नहीं बोलना है कि फेरारी के लिए यहां पर आ रहे हैं. बट आई वॉन्ट टू बी हियर learning from the top professors, right? And to really reflect, learn from other my batchmates, my cohort, whoever it is, and then get that transformational experience and come out as a better human being, as a better professional, as a better leader, a leader who is socially responsible, right? And the word is now environment, social, and governance. So you are somebody who is ESG ready, right? ESG is a buzzword. So when I start doing all these GD sessions, I'm going to come with GD sessions also. Not GD, but basically knowledge sessions for your interviews. Then I will talk about a lot of stuff, and ESG is going to be very crucial there, isn't it? So therefore, I would suggest that if you are able to reflect all these things in your answer as to why management, I think you will be able to manage this very well, right? So I hope I've been able to answer that question of why management. The second question was why this particular business school. Again, research is what you have to do. Please do a lot of research. So it could be this business school because
प्लेसमेंट्स ऑब्वियसली, और ये बोलना नहीं है प्लेसमेंट्स, राइट, बिकॉज ये सबको मालूम है, उनको भी मालूम है प्लेसमेंट इज व्हाट। अगर वो प्लेसमेंट हटा देंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू इवन लुक एट दैट कॉलेज। इट गोज विदाउट सेइंग। तो ये जो मतलब वाई टू स्पीक समथिंग विच इज सो ऑब्वियस। सो प्लेसमेंट वाला पार्ट ही हटा दीजिए, राइट। अभी चले आते हैं फीस, वो भी पार्ट हटा दीजिए। पीपल से एफएमएस बिकॉज इट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड फीस। कम ऑन, आप एफएमएस का फीस 25 लाख कर दीजिए, फिर भी लोग ज्वाइन करेंगे, राइट। देयर इज अ वैल्यू एडिशन दैट हैपेंस। सो इसलिए फीस इज नॉट दैट मच ऑफ अ क्राइटेरिया जिसके चलते पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। आई थिंक पीपल are attracted first towards placements, but again that's obvious, so you do not have to speak what other things. And every business school is unique, right? Go through the course structure, do a research in professors. So if you want to go for marketing or for finance, look who are the professors who are stalwarts in that particular business school. What kind of exchange programs are there? What value these exchange programs has to offer, right? And also look at integration between the kind of companies you want to join, the kind of profiles that are on offer, and what is being really offered at business schools. So let's take up, you want to join FMCG companies, and you find that couple of institutions, they offer a lot of FMCG companies, right? You want to join financial sector, and you find that those financial sector is there. I recently found that one of the institutions, it offered a position. McKinsey offered a position in that. So normally it was ABC and a couple of more institutions. This is a new institution which came up, and McKinsey offered 50 lakhs there. So, and you want to join consulting. So, why not that particular institution? Research. That is why that particular institution. And if you are able to really integrate, you can say that, okay, this part of your course structure, I really liked it. Right. This is the specialization I am looking at. This is the depth I am looking at. तो थोड़ा कोर्स में भी अंदर चले जाइए, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, go into the depth. That's why I want to be in your business school. You look at the batch size, you look at the cohort, that ठीक है, यहाँ पर जेंडर रेशियो ऐसा है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स का रेशियो ऐसा है, यहाँ पर इतने इंजीनियर, इतने वर्क एक्सपीरियंस, go into that and talk that this is the power of a business school. So I like the fact that you have such a nice diversity. I like the fact that you have a mix of work ex and people without work ex. I like the fact, the gender ratio, right? I like the region. I also like the fact that there are some of the people from US and UK are actually coming to India and studying because of your college. So must be something good happening here. Speak about it, right? And also I like the fact that by joining this business school, I know these alumnus of yours who have become CEOs later on in life. So if they can become CEOs, and they were from my college, they were from my city, right? They were from my subjects. कुछ तो आप connect कर देंगे. And if you're able to connect that, then I think the job is done. So I think I have spoken enough on these two questions. Let me see now. So again, I'm going to share and take up some more questions, right? Which is the next question on offer. So yeah. So why not later or earlier? Important question. A lot of times you get such questions that abhi kyun karna hai MBA? Then you can say that, sir, I'm a final year student, and the kind of student I am, I know that one मेरे पास काम नहीं मिल रहा है. Right. If you belong to my city, let's take up Patna. Unfortunately, and there are many cities, not only Patna, there are many cities, smaller cities, where you do not have corporate world इस तरह से. Right, so you don't get opportunities to work only. तो फिर काम क्या करेंगे? I am a history graduate, suppose. Right, I am a political science graduate. I am also a BBA. Hundreds and thousands of BBA are being churned every year from my city. मुझे नहीं मिल रहा है काम. तो अगर काम भी नहीं मिल रहा है तो हम वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं हो पाएगा. सो घर में बैठने से अच्छा है, वुड रादर upskill myself, and then go for an MBA program. So I don't have to be shy about this. If I am working, then हम बोल सकते हैं कि my learning curve has stopped. Now I'm not able to learn anything new. Right? I need career growth, progression. That is why now. सो इसलिए 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, काफी, अब आगे हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एंड ग्रोथ भी नहीं हो रहा है. आई नीड टू चेंज. अभी आई एम अ सेल्स पर्सन, आई डोंट लाइक दिस सेल्स, मैंने देख लिया. सो अभी मुझे एचआर में करना है, मुझे फाइनेंस जाना है. दैट्स द रीजन आई वुड लाइक टू मूव. Let's go to question number 14. So, what are your short term career goals after this program? And 15 is long term career aspirations.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट आज ही हम क्लास में लोगों को बता रहे थे कि ये शॉर्ट टर्म करियर गोल्स, लॉन्ग टर्म करियर एस्पिरेशंस जो है, इसमें बहुत सोचने की जरूरत है। जैसे कई लोग ना एक बना बनाया आंसर बोल देते हैं, ठीक है डियर सर, शॉर्ट टर्म आई वुड लाइक टू वर्क गो फॉर एन एमबीए फॉर 2 years, आफ्टर दैट आई थिंक आई विल बी इन द मिडिल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, एंड लॉन्ग टर्म आई वुड लाइक टू बी ए सीईओ। आई थिंक आपने ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया by answering in such a banal का मतलब I'm sure you know यार, आप लोग सब अच्छे लोग हैं, but boring kind of a stuff, something which is enough। see, इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि आप कुछ उनको ऐसा कुछ बोलें, it will attract you them towards you, it will differentiate you from others। तो ये रन ऑफ द मिल आंसर करने से यू आर नॉट इंप्रूविंग योर चांसेस। फिर आप कंप्लेन करेंगे, अरे इतने परसेंटाइल पे सर नहीं हुआ, ये कन्वर्ट वाला परसेंटाइल नहीं है। राइट, और हम बार बार बोलते रहते हैं कन्वर्ट अनवर्ट का कोई परसेंटाइल नहीं होता। अगर आपको कॉल कर लिया, वो सेलेक्ट करने के लिए किया है, अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आप को कुछ ऐसा बोलें कि वो आपको सेलेक्ट कर ले। तो आप ये रटा रटाया वाला आंसर बोलेंगे तो कैसे करेंगे वो? इजंट इट? इस पर आपको बहुत प्रिपरेशन करने की जरूरत है। मैं कुछ फूड फॉर थॉट दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक अप, यू वांट टू बी इन फाइनेंस एंड यू वांट टू बी इन, लेट्स टेक अप अ बैंकर। नाउ आई शुड नो कि एक टिपिकल बैंकर अगर मार्केटिंग में या फाइनेंस में आता है, राइट, लेट्स टेक अ फाइनेंस में आता है, व्हाट डू दे डू? एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लोन्स में अगर आप आ जाते हैं और आप फाइनेंस के पर्सन है, तो व्हाट डू यू डू इनिशियली? पहले 2 साल तो आप एप्लीकेशन ही चेक करते रहते हैं, एंड यू फाइंड एंड पुट द पैरामीटर्स ऑफ वट एवर एचडीएफसी बैंक विल ट्रेन यू, कि यार इसको लोन देना है कि नहीं देना है। राइट, यही करते रहते हैं 2 साल, एंड ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस, सो यू आर एबल टू टेक अ डिसीजन। उसके बाद क्या करते हैं? 5 साल के बाद यही करेंगे क्या? आई डोंट थिंक सो। राइट, सो यू मस्ट नो that you might actually be called to bring in new financial instruments, अपना प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, विच कैन बी इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, इजंट इट? 5 साल के बाद ये करेंगे। फिर 10 साल के बाद यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस, राइट, यू विल बी हैंडलिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स, विच अंडर यू पीपल विल बी ब्रिंगिंग न्यूअर प्रोडक्ट्स एंड यू विल बी ब्रेन स्टॉर्मिंग। 15 ईयर्स के बाद क्या कर रहे होंगे? सीएफओ हो गए होंगे। नाउ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कैन यू प्लीज डू सम रिसर्च ऑन दिस? एकदम क्लियर कट होना चाहिए। फिर आप उनको बोलिए कि देखिए सर, इतना ज्यादा तो हम बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मोर और लेस आई एम वेरी सॉर्टेड दैट आई एम गोइंग टू टेक मार्केटिंग। उस मार्केटिंग के लिए मैंने फिलिप कोटलर बुक पढ़ लिया। सी, हम अपने पिछले वाले वीडियो में भी बोले थे, हम 10 किताब पढ़कर गए थे फाइनेंस का, तब जाके मुझे हिम्मत हुआ कि हम आई सेड कि ठीक है, मुझे फाइनेंस करना है। राइट, 10 किताब पढ़ के। आप भी पढ़ लीजिए ना 8-10 किताब, और बोलिए कि देखिए सर, ये सब 8-10 किताब हम पढ़कर आए हैं आपके पास, अब मुझे थोड़ा थोड़ा एकदम क्लैरिटी हो रहा है कि मुझे करना क्या है। फिर हम 10 लोगों से बात करके आए हैं। तो ये 5 साल में शॉर्ट टर्म में मुझे दिखा कि आपके बिजनेस स्कूल से पास होकर के हम यहां तक पहुंच सकते हैं। आई एम थोड़ा मोर एम्बिशियस, थोड़ा और हम सोच रहे हैं कि यहां तक पहुंच जाएंगे। राइट, और उसके बाद 5-7 साल के बाद तो मेरा हार्डवर्क, मेरा लक, और उस समय का सिचुएशन कैन टेक मी एनीवेयर। अगर स्टार्टअप में चले गए तो हम सीएफओ ही बन जाएंगे, और लार्ज कंपनी, बड़े बड़े बैंक्स में और म्यूचुअल फंड्स में चले गए, या फिर ब्लैक रॉक में चले गए, जेपी मॉर्गन में चले गए, तो उन सब में तो थोड़ा टाइम लगता है। सो आई वुड बी इन अ, यू नो, थोड़ा नॉकिंग टॉप मैनेजमेंट इन 10 years टाइम, इन 15 years टाइम, ऑब्वियसली इन टॉप मैनेजमेंट। हो सकता है सीईओ बन जाएंगे, हो सकता है कि एक प्रोडक्ट के हेड बन जाएंगे। दीज आर व्हाट आई हैव सीन in 15 years time. This is what is my long term and short term career aspirations. Right, question number 16 is same. Why do you see, where do you see yourself 5 to 10 years? Same questions repeated. How will this degree help you achieve your goals? ये why MBA में बोलना था, right? How will it help you achieve your goals? So then goals are these 5 year, 10 year career goals. So if my goal is to be a, CEO, so obviously सीईओ 20 साल पहले, सीईओ बनने से पहले बिजनेस स्कूल में क्या सीख करके जाता है? लीडरशिप क्वालिटी सीख करके जाता है, टीम वर्क सीख करके जाता है, इजंट इट? अप्रिसिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ दैट टाइम, वो सीख करके जाता है। कांस्टेंट लर्निंग सीख करके जाता है, रीडिंग स्किल्स सीख करके जाता है। राइट, देर आर सो मेनी थिंग्स इन बिजनेस स्कूल, एंड ऑल्सो टैपिंग अदर एरियाज। How to tap, I'm working, let's take up in a FMCG sector, how to tap good things which are happening in pharma,
what is happening in consumer durables. So many things can be done. So, to achieve my goal, this degree is going to put me into a grind. इतना हार्ड वर्क करा देगा, इतनी स्ट्रैटेजी सिखा देगा that I'll be able to really successful perform my roles and responsibility in business school, and that's why this degree is going to help me out. Okay. Why are you switching industries or careers? Obviously, if it is applicable. आप बोल सकते हैं कि this industry is where I am working is not a sunrise industry. I want to work for solar. I want to work for electric vehicle. I want to work for fast growing industries, Paytm, right? Fintech, Swiggy, Zomato, ये सब. अभी हम काम कर रहे हैं लिबर्टी शूज में. अभी हम काम कर रहे हैं HUL में. इन सब में तो 5 to 10% ही ग्रोथ होता है. आप कुछ भी कर लो, आप पूरी दुनिया में कुछ नहीं होने वाला. राइट. Consumer FMCG products, 5-7%, 10%, 12%, 14%. That's the kind of growth which are going to happen. But I want something जहां पर टेक्नोलॉजी इज मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस. आज ये इंडस्ट्री है, कल को रहेगा भी नहीं. That's the kind of excitement I want. That's why I'm switching my industry or career, if whatever is applicable to you. Right? A lot of things you can say about this. So I've given you a couple of food for thought. Now there are two more questions. How do you plan to use what you learn here in real life? Which is the same question. How will this degree help you in achieve your goals? And how would you do? What would you do if you didn't get into this business school? ये वाला interesting question है. तो इसको करके अभी आज का क्लास ओवर कर देंगे. ठीक. So 20th question is very interesting. What would you do if you're not selected here? कई लोग ना बड़े इमोशनल हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं सर, आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो अगले साल हम फिर आएंगे. तो फिर बोलते हैं नहीं नहीं, अगले साल भी नहीं सेलेक्ट करेंगे. दे स्टार्ट प्लेइंग गेम्स. तो बोलते हैं नहीं नहीं, फिर से आएंगे. आई थिंक इट्स वेरी वेरी सिली. राइट. इट शोज इमेच्योरिटी. किसी के चलते जान नहीं देना है. एकदम क्लियर कट बोलिए, हम्बली बोलिए दैट सर आई नो यू अट्रैक्ट सम वेरी गुड टैलेंट. बहुत अच्छे अच्छे लोग आपके पास इंटरव्यू में आते हैं. इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट आई मे नॉट बी सेलेक्टेड हियर. एनीवे मेरा थोड़ा स्कोर इधर कम है, ये वीकनेस है मुझ में. अपना वीकनेस बता दीजिए उनको, ये हमको इंप्रूव करना है, ये करना है. तो पॉसिबल है कि आई मे नॉट बी सेलेक्टेड, बट दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू बी इन अ बिजनेस स्कूल. To cover my risks, I have applied to two colleges which are aspirational. आपका कॉलेज मेरे लिए एस्पिरेशनल है. आप सिलेक्ट कर लेंगे, आई बी वेरी हैप्पी, मोर देन हैप्पी. बट आई हैव ऑल्सो अप्लाइड टू टू कॉलेजेस विच आर कंसिडर्ड सेफ कॉलेजेस. सारे मेरे मेंटोर्स कह रहे थे कि इट्स अ सेफ कॉलेज. And I have got 95, I have applied to 85 percentile college to ensure I get selected. Because for me, joining a business school at this age, this time is very crucial. Right? So, in case I do not get selected, sir, I hope to join one of the institutions and move on my life. I know it will be hard luck. और मेरे इसमें मेरे तकदीर में नहीं रहेगा कि आप हमको पढ़ाएं. Isn't it? सो अब इससे क्या होता है ना, आपका एकदम स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी रहता है. इंटरव्यू में अगर आपका क्लैरिटी है ना एंड यू आर श्योर, इससे क्या होता है, आप अपने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करते हैं. आप ये नहीं बोलते हैं अच्छा ये लड़की बोल दी नहीं नहीं अब तुमसे शादी नहीं करेंगे, आई डोंट लव यू, तो आप बोले अच्छा हम शादी ही नहीं करेंगे. ऐसा बहुत, मतलब वो देवदास वाला हिसाब किताब लेकर नहीं चलना है बिजनेस स्कूल में. दे आर वेरी ट्रांजैक्शनल. दे डोंट लव यू, दे डोंट लव देयर जॉब्स. दे आर ऑल्सो सेल्फिश अबाउट देमसेल्व्स. दे विल सेलेक्ट यू ओनली इफ दे फील कि इस बिजनेस स्कूल का नाम ये आगे करेगा, उसकी ब्रांडिंग आगे करेगा. एंड यू आर ऑल्सो वेरी सेल्फिश. ऐसा थोड़ी ना कि आप अहमदाबाद छोड़ करके आप इधर चले जाएंगे, आई एम कोझिकोड ज्वाइन कर लेंगे. यू आर नॉट ज्वाइनिंग, राइट? सो आप खुद जब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे तो वो कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? इट्स अ प्रोफेशनल वर्ल्ड. सो देयरफॉर यू डोंट नीड टू बी इमोशनल अबाउट इट कि सर आपके लिए तो एकदम जान ही दे देंगे. राइट. जैसे आज हम किसी स्टूडेंट से बात कर रहे थे, वी सेड कि सर 2 साल भी लगे तो हम अहमदाबाद जाएंगे, आई एम वेरी हर्ट. तो फिर हम उनको बोल रहे थे कि देखिए ठीक है, बट यू वर्क फॉर 2 years. राइट. उसके बाद यू कैन ट्राई एंड गेट इन टू अहमदाबाद. बट हमको लगता नहीं है कि किसी भी कॉलेज, किसी के लिए भी इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत है. बट दिस इज माई टेक, आई डिफर. बट एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर योर जो भी आपका ओपिनियन है. ऐसा नहीं है कि आप कहते नहीं नहीं हम जाएंगे वहां तो नहीं जाना है, ऐसा नहीं है. बट ऐसा मेरा फीलिंग है. अपने समय में आई डिड नॉट गेट थ्रू, सो आई डिड नॉट ज्वाइन देम. आई ज्वाइन द बेस्ट पॉसिबल विच आई गॉट इट. सो दिस इज माई फिलोसफी. राइट. अब अगले क्लास में आई थिंक आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर 10 क्वेश्चंस. राइट. एंड अगेन, if you have not watched
the earlier one, introduction one. So I would suggest you to watch the introduction one and then come to on this, right? As always, my good wishes and blessings to all of you. And take care. And whatever your questions are, you can put it in comments. I will try to answer those questions to the best of my capability. Thanks a lot. Take care.